Department of Computer Applications, Government Degree College, Pulwama. I'm delighted and honored to welcome you on behalf of my principal and my fellow colleagues in the department to this 1 week course on computer skills. It's also a glorious moment to extend my warm wishes to my other colleagues who have joined this program, particularly my students also. This course is basically to the students, for the students who are not well versed with the computer field. As we were given a chance by our principal that we should start a course in this department to help those students, because as we all of know that this pandemic which has arisen due to this COVID has brought new changes in the education system. Our teaching learning, our way of starting, our way of learning, our way of delivering lectures has completely changed to the virtual mode. And now it has become mandatory to all of us to be well versed with this technology. So with these words, I would like to start this, I would like to throw open this 1 week course to all the students of the college and to other students as well who have joined this course, which is being run by our department. Now, as our principal, Professor Farooq Ahmed Andrabi, has not reached because of some engagements, as we all of know, that principals are always having a lot of work. So we had thought that we will start this program, and as soon as our principal will join, he will also join this program and he will formally welcome you all and will start this program. Till then, we will start this program with the basics of the computer science. As we know, let me share the screen first to all of you. Let me share the screen. So, to me, I have given a job in this course that I will start with the basics. The basic computer system. Nowadays, this has become a bit of obsolete thing that I will start with the basic of computer, because all of us know, even a kid is well versed with the computer, but still we need to have some refreshing courses like brushing up the new things, what is going on today in the computer science. So I will start with the basic thing, and then I will move forward with some little bit of tips and techniques. So now, first of all, this is the basic picture of computer. As you might have seen this picture also. Nowadays there are changes in it. Now we are having all-in-one systems. We don't have this type of boxes available. These boxes were some 5-6 years before. These boxes were in our labs, in our computer labs, or at our homes also. This is a CPU, and this all of you might be knowing is a keyboard, and then this is this monitor. Now, to start with, I would like to say that this computer, how the need arises for the computer. What was the need that computer arose? Basically, this computer was started by a man that we call him a father. As a student, you might be most of the time you might be asked, some might
there were the queries that what's your father's name. So we'll start also with this, that the computer is also having a father. So who was the father of the computer? So the father of the computer was Charles Babbage. What he has done basically, so how can we say he was the father of the computer science? He was the father of the computer. He basically gave the idea of analytics and what we call differentiation. He discovered some, we call that difference engine and analytical engine, by which we were able to do the differentiation and this differentiation and analysis with the help of this computer system. And during those days, the computer was not like this. It was basically a mechanical machine. It was a mechanical machine, and the input were given with the help of cards, punch cards, and then there were switches. Like we're having this manual type of switches you might be having at your home, at your offices, at your places, other places you might have seen the switches. But those switches were also of type big type, and the computer, the size of the computer was very, very large, very huge. It would this computer would be like a building type, like we're having buildings this time, and the computer was of that size also. So what basically, what was the need of the computer? We know that we can do the things, we can do computations, as God has given us the ability to do computations, to do analysis. But to do it very accurately, to do it very fast, there's a need of the computer. The need of a computer was seen. Now, the Charles Babbage, who is considered the father of this computer science, gave the idea that a machine can help in differentiation and this analytics. So before that, there was also some machines that we know some machines like abacus. Abacus was a machine that was also used for this computing. And then this Charles Babbage gave us idea that we can do this manual things with the help of the computers. That's why this Charles Babbage is today famous for having given that he gave us the idea of computer sciences, and he is also called the father of the computer sciences. Now coming back, what computer is having, as I told you also, that computer was a very, very big machine. It was a huge machine, used to have switches, used to have long punch cards to give input to this machine, and then that after processing, after the manual processing, then we used to get the output. We can see this input as I have shown you. I'm showing you this PPT. In this PPT, you are seeing this input, process, and output. Now, as you know what input is, we are giving input through keyboards. That's the standard form through which we can give input to in today's computers, or we're having keyboards now in our this mobile phones. As we can say, mobile phone is also a computer system this time. So we have to give input. First of all, we have to give input to the computers. We can say this input can be given through, as if we will give the analogy to it in terms of a person, we can say input can be given through ears, eyes, and then we have to process that input. How we can process that input? We are having a brain. In a human being, we are having a brain, and this brain processes this information so that this information is now in the form of, so that we can apply this information somewhere. Now, also computer is having input, and we give input to the computer, and then there is a processing system. There
CPU takes place, and CPU processes this input information and then gives us an output. So output is like a voice, like something on a printer, a hard copy and soft copy. And then in today's world, we say that computers give us the help us in decision making also. So how can computer help us in decision making? Yes, now a computer, as some years back, like 10 years back, was all of us were saying that is computer is not an intelligent machine. Computer is a deaf and dumb machine. So now things has changed. Now we cannot say that this is a deaf and dumb machine. How it is? We cannot say the computer is not an intelligent machine. As all of you know, as we know that these now cars are being run by computers. If computer is not intelligent, how can a car run on a road, on a real road? If computer is not an intelligent machine, how can we get the real time weather, this input that tomorrow what it is going to be, whether it is going to be a sunny or whether it is going to be a rainy tomorrow. So this all things done when processing is done, and then decision making is being done in the computer system. So we get the input, and this computer basically, and we don't need to give now inputs in the form of typing. Now the computer has attached with it many types of sensors also. As we know that in a real time situation like robotics, they were having embedded systems, they were having sensors. Those sensors fetch the information automatically. We don't need to give the input now. These computers work now automatically. Nobody is there to run that computer, as compared to the previously, as I told you that before, we used to have the machines that were mechanical machines. We used to give the input, then we used to process that input manually. There should be a person who will fed this computer with the input, and then run the machine with the help of the electricity, and then take the output, and then give output somebody who needs it. But now we are now in a world of humanless computers. We don't need of humans to run those computers. All the computers are run automatically. Not all, I will say, when we see the big things like artificial intelligence, we see machine learning. There, we don't need any person to run that machine. So these machines, these computers take input automatically, and then these machines process the things, and then they get the output. Let's if we'll take an example of a car running on a road. That car is attached with the sensors. That car is attached with the sensors, and those sensors basically sense the things on the road. They see the things. They see the things that where I have to stop, where I have to run. So we need to run those algorithms inside the computers, and then take the decision, and those decisions need to be taken in a microseconds. Because when a car is running, how much time that machine has, that whether that machine has to stop or that machine has to move forward. So, and there are things, whether if there is a paper on a road, that sensor will sense that paper also. And if there is a stone on a road, that sensor has to sense the stone on the stone also. Now that sensor has to take the decision whether I have to apply the brakes or not. Because if there is a paper, we don't need to, that machine don't need to apply the brakes. And when there is a stone or a big stone, we need to apply the brakes. That machine need to apply the brakes. So those algorithms need to be strong enough that they can sense whether that is a paper or whether that is a stone lying on the road, so that that machine has to take the next step. So every time that computer is running, so the processing is taking place so fast, there are lots of information coming.
as you all of you know that there are IoTs now coming. So I don't want to go into deep those things because there are other my colleagues, they will speak on those things also, ICTs and other things also. But what I want to tell you here is that no, computer is a very intelligent machine. That computer has to take the decision on its own. That computer has to work in a real environment, apart from some 20 years back where we used to run the machine, we used to give the inputs to the machine, and that machine has to run, move forward. Now, coming to this point here, what is a data? Now, data is basically the raw fact. As I told you, in a real life example of a car running on a street, this data is now, the sensors are fetching the data from all the sites, which are those sensors fitted onto the car. They are taking the information. They are taking the inputs from the road. Where is the next car? Where we have to turn right? Where we have to turn left? They are taking the inputs. What is the light system? Whether I have to put my light on, whether I have to put the fog light on or off. These all things are taken from the input in the form of sensors are giving the inputs, and then decision is being taken what switch I have to put on, what switch that machine has to put on, how fast that car has to go, how slow it has to go. So all the things have to be taken on this raw fact. And then when this raw fact, after processing this raw fact inside the processor, it gives a information that is a meaningful information now, because on that information we can take the decision how we have to move forward, how we, if I will give another examples to the students, like our students which are in our bachelors, which are doing bachelors in computer science. They run a program. Let us say they run a program of C. Now, when they run this program, they give the input. And then when giving the input, that program is executed. And then after that, we get an output. This output is basically a meaningful information. So what we need to do through this program, and when we get the output, that output is meaningful information for us. So we call that meaningful thing as an information. What we get as an output from a computer, we call that that information. Now next is this slide is basically what computer is basically made up of. Again, this will be a little of like I'm showing a candle in front of a sun, because all of you must be knowing these things. We are having hardware, we are having software, we are having liveware. So this type liveware may be something different to you. So I will discuss this thing also. I will tell you what liveware is. Hardware, you might be knowing hardware in computers. There's a CPU, there's an input device that is our keyboard, there is a monitor, there is a printer. All the things which we can touch, which we can handle is a hardware. Now, what is the software? As you also know that software is our operating system through which our system works. You might be also knowing that our computer is dependent on binary numbers. How can we give the binary info? How can we give the this data in the form of binary to the computers? Because computer only understands one language, that is binary language, that is zeros and ones. So we need to have some support system who can change over this real life language into this binary form, into this computer understandable form. What is the computer understandable form? Zeros and ones. Computer only understands zeros and ones. What is zero and what is one? This is only the voltage levels. Zero can be off level, one can be on level.
So computer only understands these things, whether the voltage inside the computer is on or off. So we need to have something in between who can bridge this gap between a human and a machine. So that is our software. That is our software. This work is done by the software. So this software is also very important. If software would not have been available, how could have we this communicate with the machine? So we need to have the zeros, and we need to remember zeros and ones, the complex things of these streams of zeros and ones to do input inside the computers, and then computer would give us zeros and ones, and then we need to recognize this word zero and one. What does this mean? That was not the feasible solution for using a computer. So this software made us really very easy for us to uh, to get the results what we want through our computers, through our computer. So our operating system is that tool which helps us to convert our language. We type in our English type language or Urdu language or some other language, because we are having a lot of languages now inside through which we can give the input. So this software converts that into the zeros and ones, basically the voltage levels what computer only understands. As you might be as all of you might be knowing, that computer only understands zeros and ones, and zeros and ones means voltage on and voltage off. So then yes, coming to the software, this software is also divided into two parts. One is system software, another is application software. The system software, as I told you, is the operating system, which helps us in bridging the gap between a user and a machine. We give instructions to the computer. Basically, we give it to the system software, and system software converts that information, that data, into the machine readable form, and then give to the machine. Machine runs it. Then after machine runs it, it gives back to the operating system. Operating system then makes available to us in the form of the language which we understand. Also, there is another type of software that is called system, that's called application software. This application software is nothing. It is basically we are having a lot of things to do in the computer because as a student has, what student has to do? Student has to do the homework. It has to do assignment. It has to do the programming. But in other hand, we're having an engineer. This engineer has to do the modeling job. We're having a doctor. That doctor has to do the research job. So we're having, all of us have used different computers in a different way. So we need to have some packages. We need to have some application softwares which are specific to the use. For student, we should have this typing software. For engineer, we should have some modeling this. For some other person like doctor, he should have some real world, this environment where he can use it for benefit of the society, in patients, in operations, and other things. So we need these application softwares. We can say simple MS, this word is an application form, application software. And other things, other application packages, you might be knowing many lot of these application packages. Now, as I discussed you, computer, we are having these tangible things, that is the hardware. This hardware consists of this CPU, this mouse, and then this is the mouse here, then keyboard, then monitor, and the software. Software, as I told you, is basically the collection of, it's a collection of programs where these programmers write the programs, and then these are used for the benefit of for the users, basically. And we're having this software, as you know, application and this system. In system software, we're having this operating system, Windows operating system, Android, and many other, Sun, Linux. There are a lot of operating systems also available in today's world. And then we are having application softwares, as you know, Windows XP, MS Word, Java, these antivirus softwares. These are all application softwares. Then this is the liveware. This is a
This is not a new thing, but this word might be a new thing to you. This liveware is basically the computer users, because we use the computer. We are also the part of the computer system now. As we are using the machine, so we are also the part of it. So this we call that a live. It is a liveware. The computer users are known as livewares. It can be anyone who use the computer. You are the livewares. I am the livewares. The participants in this program are the livewares. So we are. This is the this definition of this liveware. Now, hardware configuration. You might be knowing the processor. What is the processor? What is processor? Processor is the processing machine where all the processing takes place. As the computer is having process. Now, the difference in the previous processors and the today's processor is basically the speed. The speed of today's computer is much more greater than the speed of the previous processors, which we used to have some 20 years and some 10 years ago. Now we are having a speed of computer like 7.2 gigahertz. So what is this 7.2 gigahertz? Can anybody tell me what is this? No, this time as you are all muted, so I will tell you what is this 7.2. This 7.2 gigahertz means per second the computer is having a clock inside, and on that clock basically the this processing takes place, the information change takes place, the transfer of information takes place on that clock. And how many times this clock ticks or clicks per second is basically the speed, of the processor. And when we say 7.2 or 10 or 9.2 gigahertz, 10 to the power 9, so we say this is basically the time that this clock clicks per second. So you might be now knowing that this is the speed. This is basically the speed of the computer, 9.1 gigahertz per second. So this computer can take this much of information per second. So we are not able to give that type of this information to the computers if we directly are concerned with the computer. We cannot give it. So that's why the best use of the computer is also done when it is then when the input is given automatic, when we get the real inputs through the real-time systems. So that time, yes, they cannot give it at that speed 9.1 or 7.2 or 5.1, but still their speed can match up to the speed of the processing. Still we can say if we match with the computer, we can say 0.000000 or something like negligible thing what we are using when we are interacting with the computer, what speed we are using. That is something, a negligible part of the speed of the computer we are using when we interact, when a human being interacts with the computer. So computer can take a lot of information per second. Now memory is also the part where we can store the things, where we're having this we're having the primary memory, we're having secondary memory. You might be knowing what is the primary memory. Still, I will repeat it here. Now, we can, this is basically the ALU is also the part of this CPU. We're having two parts in it, arithmetic logic unit and control unit. So this is something that you might be also knowing. I don't want to take time on that. Now, a simple thing is that if anybody is having questions, he can ask in the chat box or later when we are having the question answer sessions. Till then, you will only listen to me. I would like to complete in few minutes, because then there will be another lecture of my colleague. So the type of the RAM, type of the memory, because the memory is of two types. One is the primary memory and another is the secondary memory. But as a computer, for working of a computer, we need only the primary memory. The primary memory is like our RAM, and then it is a ROM. This RAM, this is a simple thing that our computer, when we need some processing, we need to have
intermediate results during this. So this thing is all saved on that computer. And then this depends on the power supply. As long as we fed the power to the computer, there will be this information will be available on that RAM. And when there will be a power off or we shut down the computer, the data inside the RAM will be lost. So we need to have some other source where we can store it permanently. So we are having the secondary memory. In the secondary memory, that is hard disk in our computer, we save it permanently. We need to have some permanent solution where we can save the information for the permanent use. Or we need some information. Suppose we are doing something and we have done it partly and we need it from tomorrow. So we need to store something, this information somewhere. So there is the secondary memory. But primary memory also consists of two parts. One is random access and then one is read only. As the name suggests, that read only is that memory where we can only read. So why do we need read only? This read only is basically where from a computer gets the information how to proceed, how to get things done, because computer has to do multitasking. Computer has to load the operating system for running this program. So all the information, basic system, that's called the boot system. Boot is when we start the computer, then some program has to get some program needs to get installed so that it will become available. This computer will become available for the user, and then that information is basically saved on that ROM. There are many types of ROMs available: EROM, PROM, EEPROM. Those are all the types of the ROMs, but I will not go into the detail of that. So I will basically tell you that the types of the primary memories which you are having is basically a RAM and ROM. As the name suggests here, RAM is random access memory, and random access means we don't have to do the sequential saving in that memory, nor we need to get information sequentially as we used to have in terms of tapes. और आपने अगर देखा होगा पुराने जमाने में जो पुरानी टेप्स टाइप के होते टेप रिकॉर्डर्स में जो लगाते थे, दैट वाज अ सीक्वेंशियल टाइप ऑफ मेमोरी. वहां पे मेमोरी कैसे डेटा कैसे सेव होता था, the data used to save from the beginning to the end. So when we need to search the information, we need to search it from the basic. But in this case of RAM, we will go directly to the point where we have to get the information. So this is the advantage of this RAM. But as I told you, this RAM is a temporary, it's a volatile, because as long as the power supply is switched off to the computer, we will lose the data what we are having. But for the working of the computer, for running the programs, it is very necessary to that we should have some memory in place. So now there is a ROM. This ROM is basically, as I told you, that this ROM is having the basic information for boosting of the computer. For starting the computer, we need to have the RAM. Now, as I told you, we are having the primary memory. This primary memory is an internal memory, often referred to as it is simply a memory, and only one directly accessible to the CPU. So what this primary memory is, this is the basic memory which is available to the CPU. जो भी काम CPU को करना होता है, उसके लिए जो भी memory उसको चाहिए, वो काम करने के लिए उसको अवेलेबल होती है, यही प्राइमरी मेमोरी इसके पास अवेलेबल है. और ये कैसे, दिस मेन मेमोरी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू via the wires, where we are having the wires inside the computers, like we are having the circuits in the other these electronic systems. We are having also the wires in our computer system, and then these wires are clubbed into a one we can say a block. That block is called the bus, and these are basically the combination of wires, and we call that a bus. We are having two types of buses in the computers. One is the address bus and another is the data bus. As the name suggests, through the address bus
we give the addresses where we have to store the data in the memory and where from we have to get the data from the memory. And the data bus basically gives transfers the information, what we have to save inside the memory and what we have to get. So the data in the data bus is data bus carries the data, and the address bus carries the address where we have to store. So secondary memory, this is basically bus principal. So I would like to wind it up with that we are having the secondary memory also in our computer system. Secondary memory is our hard disk, and we are having now the other backup memories, like we are having flash drive, we are having many other CDs, we are having DVDs. So these are basically now the older terms. CDs and DVDs we don't use now. We are using these pen drives, flash drives. These are also the backup type of memories, where this is the additional memory what we use. But there is one more permanent memory inside the computers, as all of you might be knowing that there is one more, that's the hard disk. And this hard disk stores this data permanently on your computer, and whenever you need it, after how many years, after how many times you need it, you can get the information from the hard disk. Then there are types of RAMs, like we're having SRAM, static RAM, dynamic RAM. These are basically the types of RAM. This because RAM basically gives us stores the information in very limited amount of time. It doesn't store information for a permanent time, as I told you also. But there are also the types. One is static, one is dynamic. So these basically are the type. Static RAM retains its contents as long as the electrical power is applied to the chip. The static RAM में क्या होता है कि जब तक आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आपके इसमें चल रही है, तब तक इट विल रिटेन द डेटा. आपके कंप्यूटर में जो डेटा है इस रैम में रहेगा. लेकिन जो डायनेमिक रैम है, इसको एक तो सप्लाई चलती ही जा रही है, अगर पावर सप्लाई चल रही है इसका, बट स्टिल इट नीड्स सम रिफ्रेश, दैट्स कॉल्ड द बूस्टिंग. इसको आफ्टर सम मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स इसको और एनर्जी चाहिए ताकि वो वहां पे डेटा सेव रहे. दैट्स कॉल्ड डायनेमिक रैम. डायनेमिक रैम में फर्क स्टैटिक रैम से यही है कि स्टैटिक रैम में अगर आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, स्टैटिक रैम में एक मिनट में, स्टैटिक रैम में पावर रहेगा, स्टैटिक रैम में वो डेटा रहेगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है. बट ऑन डायनेमिक रैम, even the power supply is onto the computer, it will still erase the data unless and until you give some boost, electricity boost to that RAM. तो बीच बीच में आपको फिर से उसको इलेक्ट्रिसिटी की बूस्टिंग देनी पड़ती है, एंड दैट इज द डायनेमिक रैम. ये एक तरीके से आपको कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट भी है. इसमें दोनों टाइप है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है. एक तो चल रही है एंड देन वी नीड टू गिव मोर दिस बूस्टिंग फॉर दैट. लेकिन दूसरी तरफ से हमें फायदेमंद ये है कि हमें उसको बार बार इरेज करना नहीं पड़ रहा है अगर हमारा कंप्यूटर ऑन ही चल रहा है. तो आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम ये ऑटोमेटिकली इसमें इरेज हो रहा है और ये मेमोरी आपको दूसरे काम के लिए फिर यूज हो जाती है. These are the things where we can store our data. These are called the storage devices. There's the hard disk one, and then there's the CD-ROM. You might have seen the CD-ROM, DVD-ROM, and these are now the older terms. But still, these things exist still. They are used to have a floppy drive. I don't know whether you might be knowing this thing or not. That was a very small memory. We used to keep small amount of data on it. But before some, I think 10, 20 years before, there was that type of storage device also. Now the communication devices, what we have, we need to have communication between the computers. As you know, internet. What is internet? It is basically the connection. It is basically the collection of the systems all around the world. We need to share the information because of the computer, because of the internet. You get the information from your friend.
you get information from some company, you get information from your office. It's all possible when we are having the connections. So how can we connect the systems? There are the things. We're having the modem. This is modem, and this is basically the short form of modulation and demodulation. We're having the modulations, we're having the demodulations on our analog signal. So this modem basically does the modulations and the demodulations, and we use it for the communication purposes. We send the data. We are having many other things, we don't need to go into the details of the things, but these are the terms which you need to remember: modem, router, switch, repeater, hub. These are the things which are the networking devices. And with this, I will end my presentation. And I'm fortunate enough that we are having with us our worthy principal, Professor Farooq Ahmad Andrabi Saab here. And I think Professor Farooq Ahmad Andrabi Saab will deliberate a few words in this training course, because he was keen enough to start this course. He has given us this chance. He has passed on the directions that we should start this course for our students, as we are all physically apart, but virtually we are connected. We know that for each day regularly we are having the classes on the Zoom platform, on the other platforms. We are connected this way. So this internet has made this thing available, and our principal has directed us that we should also start, apart from the normal coursework, apart from the normal classes, we should have something to those students who are basically not well versed with the technology that we are using this time in our studies. So with this, I would like to welcome our principal, sir, and he will like to say some words to you. Iqbal sir, is sir available? Sir, am I audible? Yes, sir. Sir, you are audible, sir. Please continue, sir. Our expert for this program, Asif Sahab, HOD BCA department, other faculty of the BCA department, the people who are joining this program, offline and online. I'm really happy to see that the college is organizing today a program for all those people who are not well versed with this technology. The previous times which we are going are now almost 7 or 8 months. The only mode through which we are connected to each other, this was this technological mode. And it has given us a lesson. Perhaps nobody among us, we people, can be unaware of this technology. He must not be having any know-how of this technology. And everybody has to equip himself with the modern trends that we are going. And basically, for everything, we must have this technical support where we can face this world in a proper and a very nice manner. You have organized this program. I, on behalf of my college, on my personal behalf, congratulate you for organizing this program. And perhaps this is a program which is definitely required at this time. And our students who have to face this, who have to join the classes, and or who have to appear in the examinations, perhaps students were not able to reach to the college,
Students were not able to make their offline presence in the college, and students were not able to communicate to each other, interact each other, or share their information properly in an offline mode. Therefore, this was the basic requirement for every people, every one of us, that we must have this, this knowledge, or this we must know how to be abreast with this new technology. And keeping in view the dire need of this technology, the Department of Computer Application of our college has started this program and has initiated this program, and I feel myself pleased, and I feel myself thankful to those people who are behind this program, and I hope that the program may serve its purpose. This program may have its way. This may give all the people a sort of confidence that they cannot be away from learning the easy methods in going to the new technological supports that one has to face in their day-to-day life. What the program will be chalked out by our professors, by the department, this will be definitely relevant to all the people who are not well versed with the technology, and although we are on the offline mode, but they will make it in a manner that everybody will understand it in a proper, and they will have any communication with their experts who will be on the other side. And every student, whether he may be belonging to my college or other students from the other colleges may be also joining this, or the students who may be having a choice to join this program, these should be also given a chance to enter into this program, so that everybody will be benefited out of this program. And this is really a requirement. This is definitely a important aspect which we have to cover today on the dire need of, on the, because of the different situation that we are facing day to day on our lives. Many more programs of this will be a basic course where I have heard the previous this talk that was delivered by, I've been listening to the Asif Sahib. This is basically a basic program. Everybody, every student has to take himself ahead in this program, in this technology, and perhaps you are more well versed, and this will also give a knowledge. This will also give a support that how to go deeper into this technology, how to understand the different concepts about this technology, and how to understand it in a better manner, so that everything about so that the difficulties that we are facing on the day-to-day life, these difficulties will be overcome. Thank you for all who have joined this program, whether on the online mode or whether on the offline mode. Thank you for the people who have organized this program, who are basically a very important aspect of this program. And I hope the program at the last, at once it is concluded, after it is due duration, it will serve its purpose for all the people who are joined to this program at this time. Thank you, my dear.
Thank you, Principal Sir. Thank you, Asif Saab. These were encouraging words from Principal, Government Degree College, Pulwama. Also, you had brief insights regarding the introduction to computers. Asif Saab deliberated on whole of the basics of the computers. Now, I will be deliberating on MOOCs, that's massive open online courses. Okay, as all of you know, that this pandemic has disrupted the normal life, but thanks to this virtual world, which has given us an option to connect to our students, to connect our friends, to connect our colleagues and all. During this pandemic as well, as Asif said, Asif Saab already told that we never stopped teaching, we never stopped learning. The teachers as well as students were connected via online platforms. Maybe it was Zoom, maybe it was other learning management systems. I found it very imperative to discuss about MOOCs because this is the right opportunity, this is the right time wherein you can join certain courses and that can upgrade your skills, and also give you certification. So I will be deliberating on these MOOCs. What these MOOCs actually mean? These are massive open online courses. What this massive means? Massive means that there is no such limit. The number of students is not limited like you can see in the brick mortar structure of universities. There's a limit to intake of the courses. Students in a particular course can join in a limited number. There is restriction in the enrollment. But in case of these massive open online courses, there is no such restriction. Also, it's open to all, means there is no qualification required for joining these courses. And these are online courses. Maybe wherever you go, you can still continue with your courses. And courses again means the C in the MOOCs again means that these courses are not only lectures, these are properly structured courses wherein you have e-content, wherein you have assignments, wherein you have feedbacks, wherein you have exams, wherein you have certifications as well. So these MOOCs now again due to this pandemic has become a buzzword in teaching fraternity as well as for students. If you can see the background where I'm sitting, I can see that the whiteboard, there is a lecture on artificial intelligence which was delivered on 17th of March. From that date onwards, we are delivering lectures only online due to this pandemic. So again, apart from your regular courses, there is an option in MOOCs. There is an option MOOCs wherein you can get upgradable skills, you can join new courses, you can upgrade your certifications, you can increase your employability. Okay, again, you will see this MOOC. It is again massive, it is huge in number. Open is open to all. Online means you can access it anywhere, anytime, and the course is again structured. So we will see a bit of evolution, how this MOOCs evolved. The precursors were to the MOOC started in 2008, wherein some online platforms were developed which started online courses. But this was not a full-fledged MOOC. Then again, the first MOOC was developed in Manitoba, Canada, which offered certain online course, and the number of enrollments in that course was around about 2,200. Then the real MOOC started when Stanford University started certain courses. Then 2012 became the year of MOOCs because there was mushrooming of these MOOC platforms wherein Coursera, edX, Udemy, and other future learn like MOOC started their operations. Then on there were increments
in the courses, and new courses were launched. Also, then from 2013 to 16, various countries developed their own MOOCs. Like India also developed one of their MOOCs, that is Swayam. So the 2012 has been the watershed moment for the development of these MOOC courses. History again is the same, wherein it started with a simple online program, that is the Connectivism or Connective Knowledge 2008, wherein the platform user was Facebook and other wiki pages and blogs, etc. People registered, around 2,200 people registered. Then I again said that 2012 is considered as the year of MOOCs, wherein Stanford University developed the open online platform, that is edX. The philosophy of the MOOC, again, anytime, anyone, anywhere. Okay, there are certain challenges in higher education nowadays. In higher education, we want to enhance quality, we want to enhance access, we want to reduce cost. Because what our basically aim is to provide education to all, provide quality education to them, and also reduce the costs. So how we can improve the quality as well as increase the access as well as reduce the cost? It can be only done if we augment our brick mortar structures with these online courses. Then only we will be able to enhance access to this online education. As you may be well aware, India is having a massive population in the age group wherein they should be in higher studies about near few years near. So what you need to do is what we need to do is that we need to enhance the access for higher education. So it is not possible to build such brick mortar structures wherein we can accommodate all of our students. So what we can do, we can use these MOOCs as an online platform wherein we can enhance access for the students. So before 2000, you are having a picture before you. Before 2000, what was there? There were correspondence courses. Then after 2000 began the online courses. Then after 2008, we have full-fledged massive open online courses. So what you can tell me is, what is the difference between online courses and these MOOCs? Online courses were simple, that you were given your teaching this learning material online, you were sent mails, or you were given these PDFs and all. Then again, MOOCs were full-fledged course where you were given video lectures, where you were given assignments, and where you were evaluated online. So MOOCs became a full-fledged course. After the entry of the MOOCs and other online platforms, our classroom teaching has changed. From that classroom teaching has taken now into flipped class. It has become a flipped classroom, wherein teachers' role has altogether changed. First of all, teacher was the center point wherein all the students got information. But now again, students use online modes of learning as well. Plus, the teacher acts as a guide on their side. It was Sage on the stage. Now he is a guide on the side of the students, guiding them about having various queries and all. So again, our learning has become blended. We have classroom teaching, we have e-learning. We are using both the modes of these. Both are having certain advantages. Like in case we use this classroom teaching enhances motivation in the students. We can obviously develop the personality of the students. We can get better feedback from the students. In case of this classroom teaching, we can have discipline as well. In case of this e-learning, we have mobility there. We can, even if our student travels from one place to another, he can still connect with us. We can have a structure of the course. We can have proper track of the students, like we use Google Classrooms or other learning management systems wherein we can properly track our students. We can track their performance. So both are having certain advantages. So we can club the advantages of the both, and we can use that mode of learning, that is blended learning. Okay, again, the picture depicts the difference from earlier and nowadays. What the difference is there. First, the learning was instructor centric, means instructor was there. He was there to teach
Now, the learner, he is having various sources. He is not having the only source as the teacher or the instructor. He is having various sources, whether it be web, whether it be library, whether be it his colleagues, whether be his batchmates, whether other portals of learning. Okay, what are the top MOOC providers? So there are some top MOOC providers which provide these MOOC courses. First is Coursera, edX, Sutang, FutureLearn, and Udacity. These are certain online MOOC providers. edX is having its affiliation with Massachusetts of Technology. Coursera, again, developed it from Stanford University, and Udacity, also from Stanford University. Okay, now let's discuss why MOOCs are critical for India. India's future in 21st century will be defined how it educates its young men, because it is having the young dividend. So if it cashes it well, it can, if it teaches this young generation well, India can develop as a great nation. If it is not able to teach or to make them skilled, their young ones skilled, India can be in a big catastrophe. So for India, the MOOCs are very critical, because we have to teach a large population. It will not be possible for the brick mortar structure to teach this huge number. So it's very imperative that India uses these MOOCs for teaching their young population. Okay, India has also started with its own MOOCs, that's national MOOCs, that is SWAYAM. You may be well aware of the name SWAYAM. In 2014, it was developed by this Ministry of Human Resource Development and also its own nationwide MOOCs initiative, that is SWAYAM, Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds. After it started, it had certain technical glitches as well. So it started with a beta version in 2016 only. So now it is fully functional, but up till 2016, it was used on the trial basis. Now it's having a full version. Okay, the chorus is there is 4-quadrant approach is applied in case of SWAYAM. You are having e-tutorial, you are having e-content, you are having web resources, you are having self-assessment. So SWAYAM is using 4-quadrant approach. For a student, he is having tutorial, he is having e-content, he is having web resources, he is having self-assessment tools available as well. Okay. So SWAYAM is an indigenous MOOC for India. This MOOC platform has been developed by Ministry of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, sorry. Now it is Ministry of Education actually. So but in case of India, it is not a single player who is running this SWAYAM. This SWAYAM is run by various players. It is run by UGC, it is run by CEC, it is run by IGNOU, it is run by NPTEL, it is run by NCERT and others. But in case of SWAYAM, you can see massive courses ranging from life science courses to computer science courses to engineering courses and to various other arts and other courses. You are also having courses from school to university, like you will have courses for school going students, you will have courses, you will have PG courses over there, you have certain professional courses as well, you have certificate courses. Okay, professors from centrally funded institutions in India such as IITs, those renowned institutions from India, the professors there are involved in developing of these courses on SWAYAM. Okay, what we have seen recently, there has been a rise in the enrollment of massive open online courses. There has been an exponential rise. Not only there is an increase, there is an exponential increase in the growth during COVID-19 pandemic. If you see this graph, the web traffic over there, what is there? That you can see one of the MOOC platforms, that is Coursera.
The number of subscribers of Coursera was 27 million in February 2020, but it has now reached 70 million in July 2020. This is the stats as of now. Again, the other MOOC providers like edX, the number of subscribers is almost doubled as well. In case of Future Learn, same is the story. In case of Class Central, again, the story is like that the number of subscribers have substantially increased. In case of Coursera, it has really exponentially increased from 27 million to 70 million. It has almost doubled. Okay, again, you can see these statistics. The Coursera users in 2019 were 8 million. Now it has gone to 20 million. Same edX 5 million to 8 million. Future Learn 1.3 million to 4 million. So the total number of enrollments in Coursera till date is 65 million. In case of edX, it is 32 million. In case of Future Learn, it is 13.5 million. In case of others, you can see. Okay. Also, there was some initiative by these MOOC providers during this pandemic that they provided some free certificate courses as well. These are free courses. All the MOOCs almost are free, but for certification, they take certain fee for certification purpose only. So that fee was also waived off during this pandemic, and we had opportunities for joining these MOOCs. What I advise to my students is that apart from their normal degrees, they should enroll in these MOOCs courses so as to enhance their skill set as well as to enhance their employment opportunities as well, because obviously the market needs skilled persons. So you can enhance your employability by taking these courses. Most of the courses are free, and for certain courses you need to pay a nominal fee for certification. You can join free courses only if you don't have that much amount with you. You can join free courses as well. Okay, let me show you a bit of these platforms. For example, let's take this India's own indigenous platform, that is NPTEL, or we can check SWAYAM as well. Okay, you can explore the courses there. You can see the courses ranging from agricultural sciences to hello Manal sir. Yeah, The screen is not visible. Kindly share your desktop. okay, sir. So is it visible now? Yeah, now it is visible. Okay. Okay, we can see the courses ranging from agriculture sciences to accountancy to computer science. We have courses on Android, we have courses on C++, we have courses on mathematics, we have courses all over all the subjects. Swipe is also having an Android app as well. You can enroll there as well. You can enroll there and you can go through the courses there as well. But in case of you want to enter to a desktop, then the website is swayam.gov.in. You can check the courses, whatever courses you want to pursue. You are having courses from ACIT, you are having courses from IGNOU, you are having PG courses as well there. So you can select the course of your choice. Even if you are having certain hobby, you will find the courses for them as well. You can even find courses for cooking. You can even learn certain new languages. You can learn certain foreign languages as well. So you can obviously upgrade your skills. Again, we are having some big MOOC platforms, like edX is one of those that has been developed by Stanford University.
You can see the number of courses ranging from computer science to languages to data sciences to business management to engineering and humanities. So there's a wide range of courses. You can choose among these courses whichever course you want to pursue, whether it be your passion, whether it be your hobby, or whether you want to increase your employability skills. Again, Coursera, which is the largest MOOC platform nowadays, Coursera, you can see, you can check out the courses on Coursera as well. You have courses on machine learning, and you can see that these courses are free of cost now. During the pandemic, many of the courses were given free of cost for the teacher fraternity as well as the student fraternity. There are many examples wherein various students have taken these MOOCs courses and they have become very much successful in their life only learning through these MOOCs courses. Nowadays, you can be having an arts course, but you can also learn computer science using these MOOCs. So learning is now unstoppable. You can learn anytime, anywhere, whatever you want. If you are having any questions, okay. Thank you, Manan sir, for this wonderful session on MOOCs. Okay. Assalamu alaikum, dear students. I'm Muhammad Iqbal Bhat, and I will be taking the last session of today's this course, and that will be on operating system. So I will be deliberating on operating system, as a number of students have insisted that the instruction should be given in some native language. So I will be switching to Urdu or a mixture of English and Urdu. So I will be giving instructions in that language only. So first, let me share the presentation. चलिए, तो मैं इस लेक्चर में बात करूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, और ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल सेशन पे जाएंगे। हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कैसे करते हैं और एक बूटेबल डिस्क कैसे बनाते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे फिर कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज क्या है। जो बेसिक नेसेसरी फंक्शनैलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम की है वो हम कवर करेंगे, और उनके मुतालिक मैं बताऊंगा कि वो फंक्शनैलिटीज विच आर ऑफ योर कंसर्न, जो आपके लिए है, आपको जरूरत पड़ती है, वो फंक्शनैलिटीज मैं इसमें कवर करूंगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो जैसा कि फर्स्ट सेशन में आसिफ साहब ने आपको बताया कि एक कंप्यूटर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट थिंग्स का होता है। तो इस कंप्यूटर में जो इसका कोर और ब्रेन कहा जाता है, दैट इज सीपीयू, और इस सीपीयू के साथ हमारी डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्टेड होती है। जैसे सीपीयू में हमारे पास रैम भी होती है, इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी होता है, इसके साथ एसोसिएटेड कैशे होती है, बस होती है। तो ये एक किस्म के पार्ट्स होते हैं जो कि एक्चुअली जब हम कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन ये सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। तो ये एक किस्म के कंपोनेंट्स है जो कि एसोसिएटेड होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। देन वी सी दैट कि हमारे पास नेटवर्क इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी हम नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो हमारे पास डिफरेंट नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ। राउटर होती है, जैसे डायग्राम है उसका, या इसके साथ इथरनेट कार्ड्स होते हैं, और डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं, स्विचेस होते हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट्स कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये इक्विपमेंट्स हमें मदद करते हैं
डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कनेक्टिविटी के लिए, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो ये भी पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। देन वी हैव स्टोरेज एलिमेंट्स। स्टोरेज एलिमेंट्स है जहां पे हम अपना डेटा जो है स्टोर करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरेज एलिमेंट्स है, जो कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि हार्ड डिस्क है हमारे पास, जो कि परमानेंट स्टोरेज के काम आता है। डीवीडी सीडीज, जो कि अब तो एब्सोल्यूट हो गई है, अब तो यूज नहीं होती है। इसके साथ साथ एक्सटर्नल एचडीडीज, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, जिनको हम रिमूवेबल ड्राइव्स भी कहते हैं। प्रीवियसली हमारे पास फ्लॉपीज होती थी, उनकी स्टोरेज बहुत कम हुआ करती थी। आजकल हमारी टेराबाइट्स में हार्ड डिस्क आती है एक्सटर्नल। हमारे पास रैम है या इक्विपमेंट्स है, ये भी स्टोरेज एलिमेंट है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम्स आप लोगों ने कवर किए। इसके साथ साथ पेन ड्राइव्स है, जो पेन ड्राइव हम रिमूवेबल, जो कि डीवीडी का एक अल्टरनेटिव हमारे पास एक करंट वर्जन आ गया है। डीवीडी की जगह हम पेन ड्राइव अब यूज करते हैं। तो ये स्टोरेज एलिमेंट्स भी इस कंप्यूटर का पार्ट है। देन वी हैव प्रिंटर, स्कैनर, दीज आर आल्सो कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। उसके साथ साथ मॉनिटर कनेक्टेड होता है, जिसमें हम डिस्प्ले देखते हैं, जो कि आउटपुट डिवाइस है इसका। हमारे पास कीबोर्ड है, जिसके थ्रू हम टेक्सचुअल या इंस्ट्रक्शनल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, ये भी इसके साथ कनेक्टेड है। देन वी हैव माउस, जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे कि मैं अभी इसको मूव कर रहा हूँ, एक कर्सर की सूरत में आता है सिस्टम पे, और इस कर्सर को जहां पे हम एक क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट करता है, डबल क्लिक करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसमें डिफरेंट बटन्स होते हैं। देन वी हैव ऑन टॉप ऑफ दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस, वो सॉफ्टवेयर, वो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स जो कि हमारा काम करते हैं। जैसे इसमें हमारे पास है वर्ड, हमारे पास है पावर पॉइंट, हमारे पास है एक्सेल, पेंट है, कोरल ड्रा है, डिफरेंट एप्लीकेशन, ब्राउजर है, ये सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो अब इसके अलावा भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं इस कंप्यूटर सिस्टम में। लेकिन अगर हम देखेंगे ये सारे काम कैसे करते हैं, हाउ डू दे कोऑपरेट विद वन अनदर, ये सारे इक्विपमेंट्स एक दूसरे के साथ लिंक कैसे हो जाते हैं, ये कैसे फंक्शंस करते हैं, सीपीयू कैसे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, माउस के इस पॉइंट को कैसे रिकॉग्नाइज करता है कि इसने क्लिक कहां पे किया। ऐसे ही जब हम कभी कोई फाइल पे क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाती है, वो प्रिंट क्यों नहीं हो जाती, कोई गलती क्यों नहीं हो जाती वहां पे। जब मैं कीबोर्ड पे ए एंटर करता हूं तो वहां पे कोई और कुछ नहीं हो जाता है, वही ए हमारे ब्राउजर पे या कहीं पे डिस्प्ले हो जाता है। तो इन सब को कोऑर्डिनेट कौन करता है, वो इज कोऑर्डिनेटिंग देम। हमारे पास छोटा सा कोई इदारा होता है या ट्रैफिक सिस्टम होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें ट्रैफिक पुलिस की जरूरत पड़ती है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो इतने इक्विपमेंट्स एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, हाउ आर दे कोऑर्डिनेटिंग। तो इनको कोऑर्डिनेट कराने के लिए हमारे पास एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है which is managing different kinds of equipments inside a computer system and is making it usable। तो एक मशीन जो कि एक बेयर मशीन है, वो मेरे लिए यूजेबल नहीं है जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम उस मशीन को मेरे लिए यूजेबल ना बनाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक सॉफ्टवेयर है। जैसे हमारे पास वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, पेंट, ये एप्लीकेशंस है, इनको हम कहते हैं एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये यूजर का कोई काम करते हैं। कोई टाइपिंग के काम आता है, कोई कैलकुलेटर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनके काम आता है, तो कोई हमें पेंटिंग के काम आता है। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि बाकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है। सो इट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये एक एनवायरनमेंट हमको देता है, ये इन सब को कोऑर्डिनेट करता है, और एक सिस्टम को, एक कंप्यूटर को फंक्शनल बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम इसकी तीन चीजें, तीन फंक्शनैलिटीज देखते हैं। एक कि ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, जो हमारे पास प्रोसेसर है
प्रोसेसर पे कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, रैम में कौन सी इंस्ट्रक्शन रखनी है, किस प्रोग्राम को किस वक्त एग्जीक्यूट करना है। जब हम प्रिंट देते हैं प्रिंटर के लिए कि कोई डॉक्यूमेंट मैंने रखा है इसको प्रिंट करना है, तो वो डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंटर तक जाता है, इस प्रिंटर को कौन मैनेज करता है। तो ये सारे हार्डवेयर कंट्रोल करने वाला कौन है, दैट इज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। इन एडिशन टू दैट इट मैनेजेस एंड एलोकेट्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कौन से है, जो कंप्यूटर में डिफरेंट रिसोर्सेज है, हमारे पास मेमोरी है, हमारे पास प्रोसेसर टाइम है, ये रिसोर्सेज हमारे पास है, ये इन रिसोर्सेज को मैनेज करता है और एलोकेट करता है। अगर हमारे पास एक वक्त में डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही है, जैसे अभी मेरे सिस्टम पे एक साइड में पीपीटी भी चल रही है, दूसरे साइड में जूम का प्रोग्राम भी चल रहा है, तीसरे साइड में ब्राउजर भी चल रहा है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन भी चल रही है, ये एट अ टाइम प्रोसेसर पे अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रही है। तो इनको प्रोसेसर का टाइम कौन देता है, रैम में कैसे मैनेज करता है, ये सारे काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट टास्क इज इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू यूज द मशीन। ये ऐसा इंटरफेस हमें देता है जिसके थ्रू हम इस मशीन को यूज कर सकते हैं। जैसे हम वर्ड को यूज करना चाहते हैं, लेकिन उस वर्ड को हम पहले इंस्टॉल करते हैं, फिर उसका एक आइकन आता है, उस पर क्लिक करते हैं, तब जाके वो ओपन हो जाता है। तो ये इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है कि मैं इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगा, इसकी फाइलें कहाँ पे रहेंगी, इसके रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है वो कहाँ पे रहेगी, वो सारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और ये एक ऐसा इंटरफेस मुझे देता है विच इज यूजर फ्रेंडली, विच इज क्वाइट इजी टू यूज। हमारे पास जो अभी सिस्टम है, छोटे बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंटरफेस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, इजी इंटरफेस। तो दिस इज brief introduction about operating system. So in nutshell we can say that operating system which is the boss and controller of the computer system. जैसे एक ऑफिस में एक हेड होता है, वो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, डिफरेंट एम्प्लॉइज को बोलता है ये काम करो, वो काम करो, इस टाइम पे ये काम होना चाहिए, वो डिपार्टमेंट इसके हवाले, ये काम इसके हवाले। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम एक बॉस होता है, कंट्रोलर होता है कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि एवरीथिंग जो भी कंप्यूटर में है उसको मैनेज करता है, एक यूजेबल इंटरफेस देता है यूजर्स के लिए। इवन ए क्लिक ऑफ ए माउस इज कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। जब मैं कहीं पे क्लिक करता हूं तो इस क्लिक के पीछे कोई कोड एग्जीक्यूट होता है कि ये क्लिक कहां पे हुआ, किस एप्लीकेशन में हुआ, पीछे से कौन सा प्रोसेस करना है। जैसे अभी ये पावर पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, तो ये रिकॉग्नाइज करता है। ये सारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम पीछे से हैंडल करता है। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन कौन से। एक तो ऑब्वियस है जो कि आप सब जानते हैं, विंडोज का। जैसे कि अभी जो करंट वर्जन है विंडोज 10 चल रहा है, इससे पहले विंडोज 7 था, उससे पहले विंडोज विस्टा था, उससे पहले विंडोज एक्सपी था, उससे पहले सिंपल विंडोज जिसको हम कहते हैं विंडोज। तो ये डिफरेंट वर्जन इसके हैं, डिफरेंट फीचर्स के साथ आते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको ये रिफाइन करते हैं, न्यू फीचर्स देते हैं, न्यू फंक्शनैलिटीज ऐड करते हैं। और पहला जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत फेमस है, और खास तौर पर हमारे यहाँ इंडियन सब कंट्री में सबसे ज्यादा हम विंडोज ही यूज करते हैं, 95% हम विंडोज को ही यूज करते हैं। तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन प्रोवाइड करता है? इट इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है बिल गेट्स की, तो वो कंपनी है, उन्होंने इसको बनाया है, वो इसके ओनर है। और ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें हमें ग्राफिकल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हम यूज करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन द मार्केट। नेक्स्ट वी हैव लिनक्स। व्हाट इज लिनक्स? इट इज अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत कम और रेयर हम यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन जो कि हैकर्स होते हैं या जो कि बड़ी कंपनीज यूज करते हैं सर्वर्स के लिए, वो लिनक्स को ही यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसकी एक खासियत है कि इट इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वालों ने विंडोज बनाया, वो खाली हमें विंडोज की एक कॉपी देते हैं, जो पीछे से उन्होंने इस विंडोज का कोड लिखा है, इंस्ट्रक्शंस लिखी है, वो इंस्ट्रक्शंस पे मुझे कोई हक नहीं है क्योंकि उनके राइट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के पास है।
लेकिन इसके अपोजिट एक को इनको हम क्या कहते हैं, पेड जो हमारे पास है सॉफ्टवेयर शेयरवेयर होते हैं। लेकिन हमारे पास एक और कैटेगरी है जिनको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि स्टार्ट पहले किया था एक कंप्यूटर प्रोग्रामर ने, लिनस टोरवाल्ड्स। तो उसने ये स्टार्ट किया था, यूनिक्स से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम उन्होंने लाइनेक्स रखा, अपने नाम पे लिनक्स रखा। लिनस टोरवाल्ड्स का यूनिक्स टाइप का है ये। तो इन्होंने इसको ओपन सोर्स रखा, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, इसका सोर्स कोड नेट पे डाल दिया। डिफरेंट प्रोग्रामर्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड बोल दिया कि इसको अपडेट करो, मॉडिफाई करो, जैसे यूज करना है करो, आप फ्री हो, आपके लिए फ्री है, आप इसको जैसे मॉडिफाई, अपडेट, कस्टमाइज करना चाहो कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड एन ओपन सोर्स। और ये एक डिफरेंट कम्युनिटी है इस वक्त, बहुत सारे इस लाइनेक्स के हंड्रेड्स ऑफ फ्लेवर्स है डिफरेंट। आप लोगों ने यूबंटू का सुना होगा, तो इसी तरह फेडोरा, बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स बेस्ड है। इवन जो आप लोग इस वक्त एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, उसका जो कोर है वो लिनक्स बेस्ड है, वो इसी के ऑपरेटिंग सिस्टम की बुनियाद पे बना हुआ है। तो लिनक्स इज अनदर, यू कैन यूज दैट। और खासतौर पर सर्वर्स में ज्यादा यूज होता है। और इसके साथ साथ जो हैकर्स होते हैं, इथिकल हैकर्स होते हैं, वो इनको यूज करते हैं इन सर्वर। और ये बहुत सिक्योर है, इसमें वायरसेस वगैरह नहीं होते। Then we have another competitor of Microsoft, that is Mac operating system, जो कि एप्पल सिस्टम, एप्पल इनकॉर्पोरेशन का है। तो ये भी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत कम हम यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है मैक। तो ये भी एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ही की तरह है। और यहाँ पे यूज नहीं होता है, हम कम यूज करते हैं, जो क्योंकि इनके जो सिस्टम्स है बहुत कॉस्टली होते हैं एप्पल के। आप लोगों ने देखा होगा एप्पल के सिस्टम्स बहुत कॉस्टली होते हैं, तो लिहाजा हम इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। Then we have some operating systems related to our smartphones. तो first and foremost is Android. तो Android इस वक्त most of the participants हमारे जो है मोबाइल के थ्रू ही कनेक्टेड है, और certainly उनका जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड ही होगा। तो एंड्रॉइड क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल की तरफ से दिया गया है, जो गूगल मेंटेन करता है इस वक्त इसको। और गूगल के कुछ एम्प्लॉइज थे, उन्होंने ये बनाया था और फिर गूगल ने इसको खरीद लिया। इसकी जो बुनियाद है इस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट इज लिनक्स। इसका जो कोर है, इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शंस है, वो लिनक्स में ही लिखी गई है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल फोन्स के लिए। देन वी हैव iOS, जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके लिए, स्मार्टफोन्स के लिए, एप्पल स्मार्टफोन्स के लिए। तो अगर आप लोगों ने एप्पल आईफोन लाया होगा, आईफोन, तो उस आईफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट इज iOS। तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मेंटेन करता है एप्पल इनकॉर्पोरेशन। और स्मार्टफोन्स के लिए कौन से स्मार्टफोन्स, एप्पल के स्मार्टफोन्स। सो दीज आर सम ऑफ द फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल इन द मार्केट। नाउ द क्वेश्चन, व्हाट शुड आई नो एज ए स्टूडेंट, एज ए नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, व्हाट शुड यू नो। अगर मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूं तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कितना मुझे पता होना चाहिए, व्हाट शुड आई नो, ताकि मुझे ये डे टू डे लाइफ, चाहे एजुकेशन मेरी है उसमें हेल्प करे, या चाहे पर्सनल लाइफ है, बाकी मैटर्स है उनमें ये हेल्प करना चाहिए। तो यू शुड नो 4 थिंग्स अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यू शुड नो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि अगर आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो वहां पे भी कुछ ना कुछ इसका पूछ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा अगर आप घर पे, लैपटॉप तो सबके पास ही अब होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसमें क्या फीचर्स है, मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ कौन सा वाला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन यू शुड नो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल इन द मार्केट, किस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसमें क्या फीचर्स है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे भी हमने देखा, विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, इसके साथ साथ स्मार्टफोन्स के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हमारे पास एंड्रॉइड है, हमारे पास iOS है, सिम्बियन एक होता था जो कि नोकिया का अपना था, लेकिन अब वो खत्म ही हो गया। तो दिस इज अनदर। देन थर्ड थिंग, यू शुड नो इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप घर पे एक लैपटॉप या डेस्कटॉप रखते हो, देन यू शुड नो हाउ टू इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्योंकि अक्सर एरर्स आते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, या वायरस की वजह से कहीं करप्ट हो जाता है सिस्टम, या कहीं पे इम्प्रॉपर शटडाउन हो गया तो सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होता है। तो वी नीड टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हर बार आप
किसी कंप्यूटर वाले के पास तो नहीं जाओगे कि मुझे इंस्टॉल करके दो, ही विल चार्ज यू, तो उसके लिए वो पैसे मांगेगा। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, जो भी हम देखेंगे। Then you should know basic and necessary functionalities of operating system. अब चूंकि आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, चाहे पर्सनल यूज के लिए चाहे एजुकेशन के लिए लैपटॉप को यूज कर रहे हैं, देन यू शुड नो बेसिक एंड नेसेसरी फंक्शनैलिटीज। आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पता नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इसमें बेसिक फंक्शनैलिटीज है वो आपको आनी चाहिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, कुछ डिफरेंट फीचर्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में, नेटवर्किंग के इश्यूज क्या होते हैं, हार्ड डिस्क को कैसे पार्टीशन करते हैं, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। नाउ फर्स्ट टू वी हैव कवर्ड, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने बोल दिया इसका। और ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल क्या है, वी कैन नाउ गूगल दैट। आप गूगल पे जाओ और आप इस पे सर्च कर दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। गूगल महाराज इज अवेलेबल, तो वहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। या इसके अलावा आपके पास यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे जा सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दे दो, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा वहां पे। तो देन लेफ्ट क्या है हमारे पास, इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉल कैसे करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को और इसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज क्या है। लेकिन ये दोनों टास्क जो है दीज आर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। ये मैं पावर पॉइंट में नहीं दिखा सकता हूं, मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूं, आपको बता सकता हूं, बट दीज आर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, सो वी विल बी कवरिंग देम डायरेक्टली ऑन दिस सिस्टम। सो लेट अस नाउ स्टार्ट knowing how to install operating system, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कैसे करते हैं और फिर इसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज क्या है हमारे पास। चलिए, तो अब फर्स्ट थिंग है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक नोटपैड निकालता हूं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, तो आपके पास फर्स्ट आपके पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप इंस्टॉल करना चाहते हो उसकी फाइल होनी चाहिए, उसकी डिस्क होनी चाहिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है उसकी डिस्क होनी चाहिए, डिस्क या आईएसओ फाइल या जिसको हम इंस्टॉलेशन मीडिया कहते हैं। आपके पास ये इंस्टॉलेशन मीडिया होना चाहिए। तो इंस्टॉलेशन मीडिया, अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हो तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, या तो आपके पास आप परचेज करोगे विंडोज 10 की डिस्क आएगी, या उसकी एक आईएसओ फाइल आप ऑनलाइन डाउनलोड करोगे, या आपके पास कोई और इंस्टॉलेशन मीडिया होगा, पेन ड्राइव की सूरत में होगा, तो ये आपके पास होना चाहिए। देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि हाथ खड़ा कर रहे हैं, चलिए देखते हैं इनका क्वेश्चन क्या है। Your Mushtaq is having question. Iqbal Saab, can we take his question first? Huh? Can we take his question first then? Yeah, we can take him. Okay, Yawar, you can unmute yourself and you can ask the question. Yawar. Is Yawar available? I think due to some technical problem. Ubaid is also there. Ubaid Rafiq. Ubaid Rafiq. You can ask a question. Ubaid Rafiq. I think again due to some network problem. So you can continue. Iqbal Saab, we will take it at the end then. Okay, sir. Okay. तो मैं कह रहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए एक तो पहले इंस्टॉलेशन मीडिया हमें चाहिए, देन उसके बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये इंस्टॉलेशन मीडिया जो है इट शुड बी इन बूटेबल फॉर्म। बूटेबल फॉर्म का मतलब क्या है, जब ये इंस्टॉलेशन मीडिया आप लेते हो इसको इंस्टॉल करने से पहले कुछ प्री प्रोसेसिंग हमें करनी पड़ती है, ताकि जब मैं वो इंस्टॉलेशन मीडिया अपने सिस्टम में डालूंगा वो उस इंस्टॉलेशन मीडिया को एग्जीक्यूट करना चाहिए, ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उस इंस्टॉलेशन मीडिया में है मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाए। तो उसको हम बूटेबल फॉर्म कहते हैं। तो बूटेबल फॉर्म, अगर हमारे पास डीवीडी है तो बूटेबल डीवीडी होनी चाहिए,
अगर हम पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं तो पेन ड्राइव को हम बूटेबल बनाएंगे। तो पेन ड्राइव को हम बूटेबल बनाएंगे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, और इसके बाद देन यू हैव टू इंस्टॉल इट, देन इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ठीक, तो पहला हम देखेंगे कि इंस्टॉलेशन मीडिया हम कहां से लाएंगे और फिर इसको बूटेबल कैसे बनाएंगे। तो इंस्टॉलेशन मीडिया लाने के लिए यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज दैट। अगर ये पेड है, अगर आप विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं देन यू हैव टू परचेज इट। तो कहां से परचेज करना है? आप किसी दुकानदार से भी, ऑनलाइन भी, डिफरेंट जो साइट्स है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, उनके थ्रू भी परचेज कर सकते हो, या आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट साइट, या किसी दुकानदार के पास भी अगर वो ये बेचता है। लेकिन अगर आपने सिस्टम खरीदा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके सिस्टम के साथ एक की आ जाती है जिसको हम इंस्टॉलेशन की कहते हैं, वो परचेजिंग के लिए होती है। अगर आप फिर से वो इंस्टॉल करना चाहते हो, आप वो परचेजिंग की यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इंस्टॉलेशन मीडिया को हम कहां से लाएंगे, उसके बाद बूटेबल फॉर्म में कैसे क्रिएट करेंगे उसको, और फिर इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक सिंपल तरीका दिया हुआ है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट या विंडोज 10 इंस्टॉल करना चाहते हो तो उन्होंने एक टूल दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड मीडिया क्रिएशन टूल। आप गूगल पे जाओ और सीधे लिखो मीडिया क्रिएशन टूल, तो ये आ जाएगी एक लिंक आपके पास। विंडोज 10 की मीडिया क्रिएशन टूल देने के बाद ये लिंक एक आ जाएगी। इस लिंक को आप ओपन करोगे तो ये पेज खुल जाएगा आपका, डाउनलोड विंडोज 10। तो सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है, मीडिया क्रिएशन टूल, विंडोज का मीडिया क्रिएशन टूल, वो आप क्लिक करोगे और आप इस पेज तक पहुंच जाओगे। ये लिंक आप रख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट की, तो फिर लैंग्वेज दी हुई है, उसके बाद सॉफ्टवेयर डाउनलोड /विंडोज 10। तो यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया, उसको अपडेट करना चाहते हो तो ये वाला इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपडेट नाउ। लेकिन अगर आप इंस्टॉलेशन मीडिया क्रिएट करना चाहते हो तो देन यू विल क्लिक ऑन दिस डाउनलोड टूल, क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा जो कि यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है नीचे, मीडिया क्रिएशन टूल। तो ये कुछ सेकंड्स लेगा, 18 MB का है। तो ये मीडिया क्रिएशन टूल आ जाएगा और इस पे आप डबल क्लिक करके रन करोगे इसको। तो ये आ गया। इट विल टेक सम टाइम, ये कुछ टाइम लेगा, ताकि ये पहले देखिए आपके सिस्टम पे क्या क्या भरा हुआ है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी के मुताबिक ये आपको सेटिंग्स दे देगा। तो वी हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी। तो ये कुछ टाइम लेगा। ये एक तरीका है मीडिया क्रिएशन बनाने का। तो ये आ गया, यू हैव टू एक्सेप्ट द टर्म्स, जो कि हम ब्लाइंडली हर बार एक्सेप्ट करते, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको पढ़ते नहीं है, तो सीधे एक्सेप्ट करते। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया यहाँ पे, आप ये इंस्टॉलेशन जो करोगे, ये डाउनलोड जो करोगे, इसको फिर आप किसी मीडिया पे रखोगे। जैसे डीवीडी हमारे पास है, या तो डीवीडी पे रखोगे या तो पेन ड्राइव पे। तो मोस्ट फीजिबल जो हमारे पास आजकल आता है दैट इज पेन ड्राइव, क्योंकि जो नए सिस्टम्स है उनमें तो डीवीडी ड्राइव आती ही नहीं है। तो आपके पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए। तो कितनी बड़ी पेन ड्राइव होनी चाहिए? एटलीस्ट 8 GB, 8 से कम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 4 पॉइंट कुछ इसका साइज आता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यू शुड हैव एटलीस्ट 8 GB की पेन ड्राइव आपके पास होनी चाहिए। डिफरेंट की आती है, किंगस्टन की आती है, सैंडिस्क की आती है, सोनी वगैरह की आती है, कोई भी। और पेन ड्राइव के मतलब एक और बात याद रखो, पेन ड्राइव में एक नंबर आता है लास्ट में, USB, या तो लिखा होगा 2.0, या लिखा होगा USB 3.0, या लिखा होगा USB 3.1, और जो लेटेस्ट है दैट इज USB 3.2। इस नंबर के मुताबिक इसकी स्पीड होगी। अगर आपने USB 2 लिया है तो USB 2 की यही 10 Mbps के अराउंड स्पीड रह जाती है। अगर आप USB 3 लेते हो तो 50 Mbps तक की स्पीड रहती है उसकी,
बहुत फास्ट होती है। और अगर आजकल आप देखोगे, आपने जो सिस्टम खरीदा होगा उसमें यूएसबी पोर्ट जो आता है, अगर यूएसबी 3 पोर्ट उसमें होगा तो उसका कलर ब्लू होगा, ब्लू कलर का आता है वहां पे यूएसबी 3 पोर्ट, उसका उसकी जो अंदर केसिंग होती है उसमें ब्लू कलर आता है। और अगर ब्लैक होगा तो उसका मतलब है वो यूएसबी 2 है। अगर यूएसबी 3.1 या 3.2 होगा, जो कि लेटेस्ट है, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 100 एमबीपीएस तक जाती है, तो इनका कलर रेड होता है, इस पोर्ट का कलर आपको रेड आएगा। तो ये भी आप सिस्टम खरीदने के वक्त देख सकते हो कि मैं किस किस्म का सिस्टम खरीद रहा हूँ। एटलीस्ट यू शुड हैव यूएसबी 3। ये जो यूएसबी 2 है ये बहुत ही स्लो होता है, तो यूएसबी 3 ही खरीदो। और जब पेन ड्राइव लाओगे तो वो भी यूएसबी 3 या 3.1 और 2 विच एवर यू कैन, इसका कॉस्ट भी ज्यादा होगा। तो आप एक यूएसबी 3.0 पेन ड्राइव लोगे 8 GB की कम से कम, तो उसको अपने सिस्टम पे प्लग करोगे और उसके बाद जब ये सॉफ्टवेयर इस पे क्लिक करके यहां तक पहुंचोगे तो क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया आ जाएगा। यूएसबी फ्लैश ड्राइव या डीवीडी या कोई आईएसओ फाइल आप डायरेक्टली सिस्टम पे रख सकते हो। तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूं। उसके बाद ये रिकमेंडेशन दे रहा है कि जो आपने सिस्टम पे अभी इंस्टॉल किया हुआ है, इस सिस्टम पे जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये उसी के मुताबिक कुछ सेटिंग्स लेता है। यू कैन चेंज दैट। यहाँ पे क्लिक करो यूज रिकमेंडेड ऑप्शंस पे, और उसके बाद आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। मोस्टली हम यूनाइटेड स्टेट्स का ही इंग्लिश लेते हैं। एडिशन कौन सा लेना है, विंडोज 10 ही, क्योंकि हमने 10 ही डाउनलोड किया था यहाँ से। और आर्किटेक्चर कौन सा, तो हमारे पास जो सिस्टम्स आते हैं इनमें आर्किटेक्चर होता है या तो x86 जिसको हम 32 बिट आर्किटेक्चर कहते हैं, या 64 बिट। तो इस आर्किटेक्चर के मुताबिक आपके सिस्टम में ये कितनी रैम या कितनी हार्ड डिस्क को एक्सेस कर सकता है वो डिपेंड करता है इस आर्किटेक्चर, और स्पीड भी कितनी ज्यादा होगी। तो जितना बड़ा ये आर्किटेक्चर होगा 64 बिट का होगा, इसमें जो रजिस्टर्स होगी वो भी बड़ी होगी, इसमें बस भी 64 बिट की होगी, तो ये ज्यादा मेमोरी को एक्सेस कर पाएगा। तो ये कैसे चेक करेंगे कि मेरा सिस्टम कौन सा आर्किटेक्चर का है, 32 बिट है कि 64 बिट? सबसे इजी तरीका इसका एक है कि आप माई कंप्यूटर पे जाओ, प्रॉपर्टीज पे जाओ, ये आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की आ रही है यहाँ पे दिखा रहा है सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64। तो इसका मतलब है जो मेरा ये सिस्टम है इसके लिए मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा x64। दूसरा तरीका इसको पता करने का है, आप अपनी सी ड्राइव में जाओ, ये मेरी सी ड्राइव है, यहाँ पे ये प्रोग्राम फाइल्स है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ये प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स x86। अगर आपके सिस्टम में प्रोग्राम फाइल्स के ये दो फोल्डर्स है, x86 का अलग है और प्रोग्राम फाइल्स का अलग है, दिस मीन्स इट इज ए 64 बिट प्रोसेसर, 64 बिट मशीन है आपके पास। अगर 32 बिट होगी तो उसमें खाली एक फोल्डर होगा प्रोग्राम फाइल्स, x86 नहीं होगा। तो ये दो तरीके हैं चेक करने के लिए कि आपको कौन सा किस्म मीडिया डाउनलोड। तो मैं यहाँ पे 64 बिट के पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट। उसके बाद आप इस मीडिया को कहां पे रखना चाहते हो, क्या आप पेन ड्राइव पे सीधे इसको राइट करना चाहते हो या एक आईएसओ फाइल, आईएसओ फाइल ऐसी फाइल होती है जिसको हम फिर एक डीवीडी पे बर्न करते हैं, डीवीडी पे डालते हैं, राइट करते हैं। तो आप दोनों कर सकते हो। अगर आप डीवीडी पे इसको बर्न करना चाहते हैं तो आईएसओ फाइल पे क्लिक करो और नेक्स्ट कर दो। अगर आप यूएसबी पे, आपने यूएसबी लगाया है, ये चेक करेगा यूएसबी लगा हुआ है, इसके बाद तो मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये इस यूएसबी पे इसको डाल देगा इस मीडिया को, जिसके बाद आप उससे इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, आपको इसके बाद नेक्स्ट करना है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। इसके बाद ये कुछ टाइम लेगा, लेकिन अगर आप के पास अच्छा इंटरनेट है तो आप जाके ये ऑप्शन यूज करो, क्योंकि यहाँ पे आप 4 GB डाउनलोड करेगा, 4.7 GB डाउनलोड करेगा, तो इसके लिए कोई ब्रॉडबैंड ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इसके बाद इस सेटअप के बाद आपकी जो, अगर आपने पेन ड्राइव पे इसको राइट किया है तो वो पेन ड्राइव आपकी एक इंस्टॉलेशन मीडिया तैयार हो गया, जो कि हमने एक स्टेप लिया था कि इंस्टॉलेशन मीडिया हमारा तैयार होना चाहिए और ये बूटेबल फॉर्म में होगा। लेकिन अगर आपने इसको कहीं सिस्टम पे सेव कर दिया एज ISO, अब इस ISO को या तो आप पेन ड्राइव पे रख सकते हो, बूटेबल बना सकते हो, या डीवीडी पे। अब डीवीडी का जमाना तो गया, अब हम डीवीडी यूज नहीं करते, तो पेन ड्राइव पे देखते हैं कि इसको कैसे
बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। ये जो हमने अभी डाउनलोड किया ISO फाइल, इसको कैसे हम एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो कि मैं अक्सर खुद यूज करता हूँ, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। दैट इज यूमी, यूनिवर्सल मल्टीबूट इंस्टॉलर। तो ये पेन ड्राइव लाइनक्स वालों का है। तो UYUMI यहाँ पे लिखोगे आप यूमी। यूमी मीन्स यूआर यूनिवर्सल मल्टीबूट इंस्टॉलर। ये एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, कुछ MB का है। इसके जरिए से आप पेन ड्राइव बूटेबल बना सकते हो। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस लिंक, पहली जो लिंक है यहाँ पे, तो इस पे क्लिक करने के बाद इट विल गो टू दिस pendrivelinux.com पे जाएगा। अब यहाँ पे नीचे जाओ थोड़ा सा, ये आपको डाउनलोड लिंक देगा वर्जन के मुताबिक। जो लेटेस्ट वर्जन है अक्टूबर 23 का, दैट इज 2.07। तो ये यहाँ पे आपको क्लिक करना है, डाउनलोड यूमी। मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो गया। इसके बाद आपको इसको रन करना है। अगर आपके पास कोई एंटीवायरस है तो वो इसको स्पैम दिखाएगा, वायरस दिखाएगा। तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, कीप दिस फाइल। इस फाइल को रखो, इसको डिलीट नहीं करना है, रन एनी वे। तो ये आ गया यूमी। अब यूमी आपको क्या करना है, जैसे ही यूमी को आप स्टार्ट करोगे, इससे पहले 8 GB की जो पेन ड्राइव हमने लाई है वो सिस्टम पे इंसर्ट करके रखनी है। दूसरा, जो ISO फाइल हमने डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं आपको बताता हूं मैंने वो कहां पे रखी है। मेरी वो इस पेन ड्राइव में है, ये है Windows 10 X64 ISO फाइल, ये यहाँ पे जो है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्री करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है कौन सी पेन ड्राइव पे आप इसको रन, ये इंस्टॉलेशन मीडिया को डालना चाहते हो, उसको बूटेबल बनाना चाहते हो। तो मेरे पास जो डिस्क है वो ये है USB 28 GB। ठीक, अगर इस पे प्रीवियस इंस्टॉलेशन है उनको आप रिमूव कर सकते हो। अगर मैंने ऑलरेडी ये बूटेबल बनाई हुई है, क्योंकि ऑलरेडी बूटेबल है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बूटेबल है, इस पे ऑलरेडी विंडोज भरा हुआ है, तो मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है नीचे से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस पेन ड्राइव पे डालना चाहते हो। तो ये जो पहले वाले है ये सारे लाइनक्स फ्लेवर्स है, यूबंटू के है, तो ये सारे लाइनक्स फ्लेवर्स है डिफरेंट। तो मुझे जो इसमें डालना है दैट इज एट द बॉटम, ये विंडोज 10, ये वाला विंडोज 10 इंस्टॉलर, ये जो मल्टी सिंगल या विंडोज विस्ता 7, 8, 10 इंस्टॉलर फाइल, ये मुझे डालनी है इसमें। उसके बाद ये आपको एक डायलॉग बॉक्स देगा जिसमें आपको ब्राउज करके ISO फाइल बतानी है और क्रिएट पे क्लिक करोगे। इसके बाद इट विल टेक सम मिनट्स, इस इंस्टॉलेशन मीडिया को ये डाल देगा इस पेन ड्राइव पे, इसको बूटेबल बना देगा कि डन, वेदर यू वांट टू इंस्टॉल अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस यूमी की एक और खासियत है, आपकी अगर पेन ड्राइव बड़ी है, 8 GB नहीं है, 1632 GB है, आप मोर देन 1 ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर डाल सकते हो, बूटेबल बना सकते हो। जैसे विंडोज 10 मैंने डाल दिया, मैं विंडोज 7 भी इस पे बना सकता हूँ एट अ टाइम। और फिर जब मुझे इंस्टॉल करना होगा आई कैन सिलेक्ट कि मुझे कौन सा वाला। तो आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो इसको बूटेबल बना देगा। तो ये था पहला स्टेप हमारा, मीडिया कहाँ से लाएंगे हम और बूटेबल। इसी तरह अगर कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वाबस्तगी रखता है, वो चाहता है, तो फॉर एग्जांपल यूबंटू डेस्कटॉप को वो डाउनलोड कर सकता है। यहाँ पे गूगल में सिंपली दे दो यूबंटू डेस्कटॉप डाउनलोड, ये आपको ये लिंक दे देगा, यहाँ पे जाना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आ गया, यू हैव टू एक्सेप्ट द कुकीज लाइसेंस। तो उसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन इसका है यूबंटू 20.04, तो ये LTS का मतलब है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, इसका मतलब है ये स्टेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा डाउनलोड पे, ये इसकी यूबंटू की लाइनक्स की ISO फाइल डाउनलोड करेगा, जो कि मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कहाँ गया,
ये है Ubuntu, ये है इसकी फाइल Ubuntu 2. ये मैं ये भी फिर इंस्टॉलेशन के लिए यूज कर सकता हूं। तो उसके बाद व्हाट आई हैव टू डू नाउ, आई हैव टू गो फॉर इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब आपके पास या तो डीवीडी तैयार है या पेन ड्राइव तैयार है, देन यू हैव टू इंस्टॉल दिस। अब इंस्टॉलेशन कैसे दिखाऊं मैं इस सिस्टम पे? तो यहाँ पे जो मेरा सिस्टम है इस पे मैं इंस्टॉलेशन आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इसको रन करूंगा, बूट करूंगा, तो इसका मतलब ये कनेक्शन जो इंटरनेट कनेक्शन अभी जूम में मैं चल रहा हूँ वो सारा चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है VMware। तो VMware क्या है? ये एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब है मैं इस मशीन के अंदर एक और मशीन इंस्टॉल कर सकता हूं जो कि वर्चुअल मशीन होगी, जो कि ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैं इसके थ्रू आपको दिखाऊंगा कि विंडोज 10 आपको इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये VMware पेड है, तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है इसमें, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, VMware को मैंने इंस्टॉल करके रखा है, इसके जरिए मैं दिखाऊंगा इंस्टॉल कैसे करना है। अब यहाँ पे आपको एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, या तो ओपन करनी है अगर आपने ऑलरेडी कहीं पे उसकी फाइल रखी हुई है, या रिमोट सर्वर के साथ कनेक्ट करोगे या क्रिएट करोगे। तो हम इस पहले वाली ऑप्शन पे जाएंगे, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। तो ये मुझे एक डायलॉग बॉक्स देगा जिसमें ये मुझे बोलता है कि किस किस्म की इंस्टॉलेशन आप चाहते हो। एक तो टिपिकल है जिसमें ये रिकमेंडेड कुछ स्टेप्स लेगा, या तो मैं कुछ एडवांस ले सकता हूं। तो हम टिपिकल पे ही जाएंगे, नेक्स्ट। उसके बाद किस मीडिया के थ्रू आप इंस्टॉल करना चाहते हो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस वर्चुअल मशीन पे आप इंस्टॉल करोगे वो कहां से आप लाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, तीन है। पहली ऑप्शन है कि आप डीवीडी के थ्रू देना चाहते हो। अगर आपने डीवीडी में जो हमारे पास डीवीडी राइटर है उसमें मीडिया बना रखा हुआ है तो आप ये सिलेक्ट करोगे। अगर आपने ISO डाउनलोड की हुई है तो ये दूसरी वाली सिलेक्ट। उसके बाद ब्राउज, और इसको बता दो कि आपने जो ISO फाइल डाउनलोड की है वो कहाँ पे है। तो ये मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक। या आप लेटर कर सकते हो जिसके थ्रू आप पेन ड्राइव रख सकते हो बूटेबल, और उसके थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपके पास बूटेबल। तो हम ये दूसरी वाली ऑप्शन यहाँ पे लेंगे, नेक्स्ट। इसके बाद इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे जो है इस ISO में, दैट इज विंडोज 10। तो ये ऑटोमेटिकली आपको बताएगा विंडोज 10 को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास एक प्रोडक्ट की होनी चाहिए। वो प्रोडक्ट की अगर आपने सिस्टम खरीदा है तो उसके पीछे चिपकी हुई होगी। और जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, जो लेटेस्ट मशीन आते हैं, उनमें आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है प्रोडक्ट की, क्योंकि लेटेस्ट जो है इनमें बायोस में ही इन्होंने भर दिया होता है कि प्रोडक्ट की कहाँ पे। जब आप इंस्टॉल करोगे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि प्रोडक्ट की कहाँ पे। तो जो यूजर नेम आपके सिस्टम का होगा वो क्या होगा, मैं DOCS लिखता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसके बाद जो पासवर्ड आप रख सकते हो सिस्टम का, इस डॉक्स अकाउंट का जो यूजर का पासवर्ड होगा, तो मैं कुछ नहीं रखूंगा, मैं सीधे नेक्स्ट पे जाऊंगा। ये बोल रहा है कि आपने प्रोडक्ट की नहीं की है तो इसके बगैर ही चलेगा, आपको बाद में ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे विंडोज 10 X64 इसका नाम होगा, आप वर्चुअल मशीन का कुछ भी नाम दे सकते हो। ये लोकेशन कहाँ पे इंस्टॉल होगी, तो ये वर्चुअल मशीन के अंदर एक फोल्डर है, आप कहीं पे भी इसको रख सकते हो जहां पे ये विंडोज 10 इंस्टॉल होगा वर्चुअली। फिजिकली हमारी हार्ड डिस्क पे होता है, ये वर्चुअली यहाँ पे हो जाएगा। देन यू कैन गो नेक्स्ट। उसके बाद आपको इस मशीन को असाइन करने हैं रिसोर्सेज। जो हमने कहा था ऑपरेटिंग सिस्टम के पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, डिस्क होती है, डिफरेंट चीजें। तो पहला है डिस्क, आपको इसको डिस्क देनी पड़ेगी, हार्ड डिस्क। कितनी हार्ड डिस्क आप इस वर्चुअल मशीन को देना चाहते हो, मैं 60 गैग्स देता हूँ, ठीक। उसके बाद इसकी जो फाइल्स होगी एक फाइल में रहेगी, जो कि ये पाथ है पीछे इस जगह पे, एक जगह पे ये रहेंगी कि स्प्लिटेड रहेंगी, तो आप सिंगल फाइल रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे। उसके बाद यहाँ पे आप इसका हार्डवेयर कस्टमाइज कर सकते हो कि इस वर्चुअल मशीन को क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए। रैम कितनी मिलनी चाहिए, इसने डिफॉल्ट 2 GB रैम इसको दे दी, मैं इसको 4 देता हूँ क्योंकि विंडोज 10 के लिए मिनिमम 4 GB होनी चाहिए। उसके बाद प्रोसेसर जो मेरे पास है, मेरे पास कोर i7 प्रोसेसर है, मींस उसमें 8 कोर्स है, तो मैं उनमें से इसको 4 कोर्स दे सकता हूँ, 2 प्रोसेसर्स वर्चुअल प्रोसेसर्स
और हर की 2 कोर्स। तो मैंने इसको दे दिया, बाकी जो मेन सिस्टम है वो यूज करेगा। उसके बाद हार्ड डिस्क जो हमारे पास है, या जो हमारे पास डीवीडी ड्राइव है वो इसके साथ कनेक्ट करनी है, या आईएसओ के थ्रू इंस्टॉलेशन करेगा या पेन ड्राइव के थ्रू करेगा, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। इंटरनेट कैसे कनेक्ट होगा इसके साथ, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। यूएसबी कंट्रोलर होगा कि नहीं, जो कौन सा पोर्ट होगा। जो मेरा ये सिस्टम है इस पे 3.1 यूएसबी पोर्ट है, 3.1 है, 2 है, 1.1 है, जो प्रिमिटिव है। तो 3.1 पोर्ट में इसको देता हूँ। साउंड कार्ड देनी है कि नहीं देनी है, इसके साथ साथ प्रिंटर इसके साथ कनेक्ट करना है वर्चुअली कि नहीं, डिस्प्ले कौन सा रहेगा। तो ये सब सेटिंग्स देने के बाद यू विल क्लोज दैट एंड यू विल फिनिश। अब उसके साथ अगर आप चाहते हो कि इसी के साथ बूट हो जाए तो यहाँ पे क्लिक करना है, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। अगर नहीं करना है तो फिनिश, ये एक वर्चुअल मशीन बन जाएगी। अब मैं इसको बूट करूंगा, जैसे कि आप अपने सिस्टम पे बूट करोगे। कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ। इन द मीन टाइम कोई मुझे कॉल कर रहा था, तो आई विल रिस्पॉन्ड टू हिम। Ubaid Rafiq. Ubaid Rafiq, you can ask the question. Ubaid Rafiq has raised his hand. He can ask the question. Iqbal Sahab, you are muted. हाँ, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वी कैन आस्क। Ubaid Rafiq, yes, you can ask the question. कौन है? पहला अपना इंट्रोडक्शन दो। Is anybody available? Ubaid Rafiq has raised his hand. शारिका फिरदौस। Sharika Firdaus. Okay, she is saying thumbs up. So nobody is except Ubaid Rafiq. मेरे ख्याल से थम्स अप जो करते हैं ये अटेंडेंस तो नहीं दे रहे। Iqbal sir, there was a question basically in the chat. They were saying how can we upgrade software of a mobile phone through our PC? Number one. वो डिफरेंट कोई, हाँ, yes, that is a different. And then there was a question, what is the difference between web page and website, by a student called Misbah Shafi. ठीक है, मैं अभी बताता हूँ इसका आंसर। Yes, and students also want some use of how to use the basic, what is the use of antivirus software, and are these softwares really useful? So these are the few questions. तो जो कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हुए हैं, तो आप जो ये बता रहा है कि आपने मोबाइल फोन को कैसे हम अपग्रेड करेंगे सिस्टम के थ्रू, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपको पहले ये प्रोसेस आनी चाहिए कि आप कैसे कर सकते हो उसको। उसकी एक फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ती है जिसके थ्रू आप उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए डिफरेंट साइट्स आती है जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स, कुछ चेंज अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फोन है उस पर करनी पड़ेगी। और वो सेटिंग्स क्या है, वहां पे आपको रूट मोड एनेबल करना पड़ता है। उसके लिए भी अपना प्रोसीजर है कि रूट मोड कैसे एनेबल करते हैं। फिर यूएसबी के थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं और उस मीडिया को जो आपको उस पर इंस्टॉल करना है उसको ट्रांसफर करते हो वहां पे सिस्टम। फिर आपको जैसे हम यहाँ पे बूट मेन्यू में जाएंगे वैसे ही अपने मोबाइल फोन पे बूट मेन्यू में जाना होता है और वहां से उसको इंस्टॉल। सो दैट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और इसके लिए पहले एक्सपर्टाइज होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप करोगे तो आपका जो मोबाइल फोन है वो यूजलेस बन सकता है। आपको पहले पता होना चाहिए कि कैसे करना है।
तो इसके लिए बेटर है कि कोई मोबाइल फोन वाला जो है उसके पास जा सकते हो, या आप खुद सीख सकते हो फिर जाके ये काम करो। तो ये एक है। सो व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? What is difference? What is the difference बिटवीन between web वेब page पेज and एंड a ए web? वेबसाइट। Yes. ठीक, तो वेबसाइट जो हमारे पास होती है दैट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ए वेब पेज इज सिंपली वन HTML पेज जिसमें डिफरेंट जो मीडिया होता है, कनेक्टेड मीडिया होता है, लिंक्ड हाइपर मीडिया होता है, वो होता है उस एक पेज में। जब हमें सेट ऑफ पेजेस बनाते हैं किसी एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, तो वो एक या किसी एक टॉपिक के रिलेटेड एक वेबसाइट बन जाती है। So that is a simple difference between a website is a collection of web pages, different pages. और वेब पेज क्या है? एक कोडेड पेज हमारे पास होता है जो कि किसी वेब टेक्नोलॉजी में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, .NET उसमें लिखा हुआ होता है, तो उसको हम यूज करते हैं एक पेज को बनाने के लिए। तो जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे GDC पुलवामा की वेबसाइट है, या ये वाली जो यूबंटो की है, ये जो हमारे पास एक पेज आ रहा है, दिस इज ए वेब पेज। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस, इनको एक ही जगह सर्वर पे रखा हुआ है। जैसे मैं इस ओवरव्यू पे क्लिक करता हूं तो एक और पेज आ जाएगा, मैं क्लाउड पे क्लिक करूंगा तो एक और पेज आ जाएगा। तो जब मैं इन सबको एक जगह पे एक साइड पे रखूंगा तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट ए वेबसाइट। तो एक्सक्यूज मी 1 मिनट, फोन आ रहा है। So I would like to announce here, as today was the introductory day for this course, and we have given you the basic information about this computer science and operating system, the MOOCs. So from tomorrow onwards, we will take a specific topic, like we will deliberate on the use of Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. So from tomorrow, there will be a hands-on training for these topics, and you have to be prepared, and you have to keep your laptops or mobile phones with you, so that you will also learn while uh, this attending this workshop or this course. So from tomorrow onwards, you will keep your laptop with you, so that you can also do a hands-on training on these subjects. ओके Okay, Iqbal sir. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये फोन आ रहा था। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि वेबसाइट। और कोई क्वेश्चन था? नहीं। तो चलिए, मैं यहाँ पे आपको, अब हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई, अब मैं आपको बताता हूँ इंस्टॉलेशन कैसे होगी। इंस्टॉलेशन के लिए आप जब अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे तो जो पेन ड्राइव या DVD है उसको सिस्टम में डाल दोगे। उसके बाद स्टार्ट में जब सिस्टम को आप ऑन करते हो तो आपको कुछ कीज पे क्लिक करके या प्रेस करके रखना पड़ता है, जिसके थ्रू वो बूट मेन्यू में जाता है, जहां से आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। मोस्टली आपके जो सिस्टम को जब आप स्टार्ट करते हो तो वो दिखाता है प्रेस F2 टू एंटर द बूट मेन्यू, या F2 होता है, या एस्केप की पे क्लिक करते हैं, या F10 पे होता है। तो ये डिफरेंट जो सिस्टम है, HP का है, डेल का है, तो उसके मुताबिक डिफर करता है। तो यहाँ पे इस वर्चुअल मशीन को बूट मेन्यू में जाने के लिए मैं इस वर्चुअल मशीन पे राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद मैनेज, उसके बाद इस वर्चुअल मशीन को मैं स्टार्ट करूंगा। तो ये सीधे इंस्टॉलेशन पे चला गया, क्योंकि ये की एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो जब आप बूट मेन्यू में जाओगे उसके बाद आपको वहां पे पेन ड्राइव सिलेक्ट करना है या जो CD होगी उसको सिलेक्ट करना है, तो ये सीधे इस ऑप्शन पे चला जाएगा जो यहाँ पे सेटअप स्टार्ट हो रहा है। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको दिखाएगा। हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। पे आ गया। तो क्योंकि मैंने स्टार्ट में खाली विंडोज 10 इस पे रखा हुआ था, तो वही दिखा रहा है किसी DVD में मल्टीपल
सिस्टम्स यहाँ पे दिखाएगा, वर्जन्स जैसे विंडोज के विंडोज 10 बेसिक है, होम, तो प्रोफेशनल है, एंटरप्राइज है, एजुकेशन है। तो यहाँ पे एक एंटरप्राइज दिखा रहा है, आपको सिलेक्ट करना है कौन सा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे तो सीधे इसने इंस्टॉलेशन कर दी, लेकिन जब आप अपने हार्ड सिस्टम पे करोगे तो ये आपको हार्ड डिस्क दिखाएगा कि कितनी हार्ड डिस्क आपके पास अवेलेबल है, और फिर उस हार्ड डिस्क में आपको पार्टीशन करनी पड़ती है। तो वो मैं फिर किसी लेक्चर में दिखाऊंगा। यहाँ पे फिलहाल ये इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लेगा, उसके बाद जब एक फिनिश हो जाएगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे वर्किंग होगा विंडोज 10। तो इसको हम मिनिमाइज करके रखते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो हम वापस यहाँ पे आते हैं। तो आसिफ सर कैन वी कंटिन्यू विद दिस और shall we stop, क्योंकि No, 8 बज गए। I think we will stop it today because it is already 1:10. Yes, we will stop it today. So we will continue it in your next lecture, I think, sir. ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ये जो लेक्चर चल रहा था, इसमें आपने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इसमें इंस्टॉलेशन के बाद बेसिक फंक्शनलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो अभी अब हम ये कंक्लूड कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू आंसर? हाँ, अटेंडेंस में यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो सारे स्टूडेंट्स अटेंडेंस जरूरी फिलअप करेंगे, क्योंकि जो अटेंडेंस हर सेशन की करेगा तब जाके उसको फिर सर्टिफिकेट मिलेगी। तो मैं यहाँ पे ये शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। तो मैंने शेयर कर दिया यहाँ पे अटेंडेंस। इस लिंक पे क्लिक करो, जो चैट बॉक्स है वहां पे मैंने कर दिया। मैं इसको यूट्यूब पे भी शेयर करता हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे भी इसको शेयर कर दिया है। अटेंडेंस फिलअप करो, उसके बाद आप जा सकते हो। तो व्हाट डू यू आसिफ सर, आप कंक्लूड कर दीजिए। Okay, sir. Okay. So with this, I would like to thank Professor Muhammad Iqbal Bhatt. He has given a very informative lecture, and I hope he will continue to do more lectures like this. And with this, we have concluded this first day schedule of this 1 week course, and we have also shared with you the link of attendance. This link will remain open for half an hour, and after that this will be closed. So you need to do your attendance within this half an hour, and if anybody is having any query, so we are ready to take this query. Is anybody there who wants to ask any question? Oral feedback of courses, Yes, is anybody? Oral feedback of the courses. We're having with us. Yes. You can ask. Question. Attendance link is also shared on the YouTube channel, which is live streaming this course. So it is available there also. You can Sharika Firdos, you can click there and you can register yourself also. So I think there is nobody who wants to ask a question, and with this we will conclude this today's topic. I thank you very much. I thank all the participants who have joined this course and have remained with us throughout this time. So thank you very much. Balls have closed now. You can end the meeting.
Sei que você vai ter hoje. Eu quero saber. YouTube So, पर YouTube. thank you very much. बस YouTube पर. तो मैं नेट ऑन करूँ ना ये क्या हुआ ये चेक ये Also close now attendance. the meeting. Até lá, unmute us. Estamos dizendo. Hello, तुम्हें लिंक सोचे में भी कर रहा हूँ attendance. Sei que você vai ter hoje. Eu quero saber. YouTube So, thank you very much. बस YouTube. Até lá, estamos unmute. तब कर ये जोन तुम मेरे के सामने ये चेक ये Also close now attendance. the meeting. Aquele que é essa menina, nem banda assim. Até lá, unmute us.